is a normal physics actually. This is part of physics. The t-shirt, this shirt is white. Now white because सारे radiations ये reflect कर देता है. Black है. Why the color is black? Absorb है. ठीक है ना? अभी जैसा उसके टी-शर्ट का कलर येलो है. White येलो रिपेल कर रहा है. येलो रिपेल करेगा और absorb कौन सा कर रहा है? इंडिगो. समझ आया? अब अगर लैम्डा का रेंज देखोगे तो लैम्डा का रेंज कैसा होता है? लैम्डा इंक्रीजेस. सबसे कम लैम्डा किसका होता है? वॉलेट का. सबसे ज्यादा लैम्डा किसका होता है? Now energy is, as you can see from this relation, it is inversely proportional to 1 upon lambda. It is मतलब हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस कौन सी होंगी? मतलब हाई एनर्जी वाला वॉलेट. So if the splitting is high, try to understand. तो वो कौन सा लैम्डा absorb करेगा? तो कलर्स क्या दिखेंगे? ग्रीन. वॉलेट के ऑपोजिट जो कलर्स होते हैं, they are light color. They are light. So it will be light in color. These are all light colors. Yellow हो गया, थोड़ा सा orange हो गया, थोड़ा सा red हो गया. Not deep in color. But अगर एनर्जी की स्प्लिटिंग उतनी नहीं है, so what is going to happen? The energy absorbed will be to this side, जहाँ पे lambda is more. तो वो absorb हो रहा है. तो दिखेगा क्या? Deep color दिखता है. Violet, indigo, blue. समझ में आ रहा है? So that's why these coordination compounds, they are colored in nature. Right? तो यहाँ से वहाँ जंप क्यों करें? इलेक्ट्रॉन्स क्यों लोअर स्टेट से हाई स्टेट में जाता है? एनर्जी प्रोवाइड करें. तो अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें नॉर्मल है. मैं नॉर्मल येलो ब्लू ग्रीन में नॉर्मल लाइट की बात कर रहा हूँ. जो नेचर में जो अवेलेबल है ना, वाइट लाइट, उसकी ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है. उसका ये लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा है. मतलब उतनी एनर्जी भी सफिशिएंट है एक इलेक्ट्रॉन को. Yeah, that's why you're seeing the color, na? Otherwise you won't see the colors. If it lies in infrared or इस वाले region में, ultraviolet में, then you won't see the colors, na? ये visible range में यही है. Question last का बताओ मुझे. I'm interested only in 3D and 4S. टाइटेनियम का क्या रहेगा? Ti का? 1:2:2:6. Last के दो बताओ. 3D1, 4S0. 4S2 ना? 4S2, 3D2. Ti3 plus would be 3D1, 4S0. Typical D1 configuration that I was discussing. Okay. So टाइटेनियम किसमें लाई करता है? फर्स्ट वाले उसमें आता है ना, D ट्रांजिशन एलिमेंट्स के. तो ऐसा भी नहीं कि the energy gap is very high. Secondly, the ligand is moderated. H2O. Moderately weak, ऐसा. So also the splitting won't be that high. Okay. Means the energy gap is not high. So अगर visible light आ रही है, तो इस range में it will absorb. Because it means less energy, ना? तो less energy मतलब lambda should be high. Oh sorry. Lambda should be high means it should be. This is high lambda. I'll just write it down, lambda low. So it will absorb radiation in this range, which is light in color. Okay, so the color of the complex should be B, somewhere in this range, violet, indigo, and it is purple in color. So our guesswork is correct. So crystal field theory is also used to explain that why the color of the complex. So this, you need to remember these two, and they are complementary. If the radiation absorbed is in the light range, ऐसा होता है, light मतलब orange, yellow types, then इसका complementary color ये दिखता है, और अगर इधर absorb होता है तो उसका complementary ये दिखता है. And this is how lambda changes, and energy is inversely proportional to lambda. So
So then you can make a guess. इन तीनों को connect करके कि कौन सा कैसा दिखेगा. Right? Okay. Now after this, so major there are three structures. कौन से? In coordination compounds. Octahedral, square planar we have discussed. Square planar and also we have discussed. Octahedral. We haven't discussed in detail the tetrahedral. Now I'm coming here. Tetrahedral we have discussed in basic chemical bond, not in complexes. Okay. So, how the tetrahedral molecule actually, the ligands are arranged in three-dimensional space. Yes. Is my question clear? In three-dimensional space, how tetrahedral molecules in a tetrahedral molecule, how the ligands are arranged around the metal atom. See, अभी ध्यान से देखो. It's a cube. क्यूब में टेट्राहेड्रल की प्लेसिंग कैसे करते हैं? बीच में मेटल रहता है एंड देन वो तीन कॉर्नर्स मतलब थ्री डायगोनल्स के कॉर्नर्स थ्री फेशियल डायगोनल्स लेंगे. थ्री डायगोनल्स कहाँ पे आएंगे? फेशियल डायगोनल्स. See, you need to pass a plane through it, right? So कोई सा भी ले लो. Take this. Okay? And then where will be the fourth one? समझ में आ रहा है? This is the structure of tetrahedral. This is the plane of a triangle. Metal would be sitting somewhere here at the center. And then it will be connected to all of these four ligands. Now, how the axes are oriented? X, Y, and Z. X will come out of the. I just draw it so that we don't spoil the diagram. Actually, X, Y, Z. Let me assume ये वाले फेस के सेंटर से बाहर निकलता है एक एक्सेस, इस वाले फेस के और एक इस वाले फेस के, something like this. X, Y, Z. Getting me? Now, make a guess and tell me. The axes are like this. This is X, this is Y, and this is going to be the Z. In D, 1, 2, 3, 4, and then 5, we have 5 है ना इसमें? कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, d x square minus y square, and then dz square. In case of tetrahedral, look at the diagram, use your brains and then tell me जो ligands आ रहे हैं वो किस direction से आ रहे हैं? Axial direction से नहीं आ रहे. The direction of the ligands is close to this line. Then the axis. समझ आ रहा है? तो अभी repulsion कहाँ पे ज़्यादा होगा? X, Y, Y. So in this case, the splitting is totally opposite than that of octahedral.
Now the two orbitals aligned along x, y and z, उधर रिपल्शन सबसे कम है. एंगल वगैरह भी निकाल के देख सकते हैं 3 dimensional space, you know that you can do that tetrahedral angle, you know 128 degrees, and also you know this is x, so you can just find out the angle that ये the ligand कितना angle बना रहा है यहाँ पे. So you can do that calculations if you are interested. But by looking at the diagram also you can easily predict that they are very much close to the bisector of these two axes rather than along the axis, because they are coming like this. Okay, so they'll split in exactly opposite to that of अपना octahedral का splitting. Here it is going to be dx square minus y square, and this is dz square. Here it will be dxy dyz in d. So is the logic clear? That how the splitting will happen in this case? Okay.